voice and zeal for music, Viraj honors his bequest with passion and with skill. Now it is said that grandparents live through their grandchildren. And so, endowed with a legacy that is as exquisite as it is divine, Viraj's renditions are reminiscent of his grandfather, Bharat Ratna Swarabhaskar Pandit Bhimsen Joshi. All of 23, Viraj is a promising musician with unfettered imagination, vibrant and verdant fecundity, not to mention exemplastic talent and potential, and he needs our support and encouragement. His reputation precedes him. He has been awarded in 2014 the Bharat Ratna Dr. M.S. Subbalakshmi Fellowship by the Shanmukhananda Fine Arts Society and Sangeet Sabha, and also the Rotary Club has bestowed upon him the Young Talent Award. But importantly, he was identified as young talent by none other than Swarayogini Dr. Prabha Atreji. So, Viraj, thank you very much for accepting our invitation and agreeing to perform here. Thank you and welcome. On the tabla today, we have no stranger to Canberra, Nikhil Harishchandrakar from Sydney. So, Nikhil is a student of Pandit Ramdas Pansule, and in my understanding, an epitome of Saath Sangat, so which means to play with, play for, not falling behind, not going ahead, and without usurping the artist's main stage. You know, that is an extremely difficult, if not impossible, thing to do. And he does it with masterly elegance and effortless ease. And that is perhaps why he's one of the most sought-after tabla players in Australia today. So thank you, Nikhil, for coming from Sydney. I will also add that today's sound is a collective effort with wire from somebody else, speakers from somebody else, but the mixer, the heart of the system is from Nikhil. So that's a very sound thing. Last, but by no measure least, Canberra's very own Shantanu Bhatt. Shantanu is a student of Pandit Vyas Murthy Katti, and in my estimation, a model of unassuming simplicity and decency. His deft touch on the harmonium is not only a treat for the eyes and the ears, but for the senses as well. An integral feature of a soiree of this nature. So thank you, Shantanu. But I will also make this point. Viraj performs in Sydney tomorrow. And this is probably one of the few times, or the first time, that Canberra is supplying an accompanying artist to a program in Sydney. Know where he is heading towards. Yes, yes, absolutely. So finally, thank you very much all for coming this afternoon with the singular and sincere intent of listening to some good music. And you would know that the word listen is an anagram for the word silent. So if you rearrange the letters in the word listen, you get silent. So please, your phone's on silent if you can. That's about it really. The toilets are located right outside. शंतनु, मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे था? तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस। पंडित भीमसेन जोशी के ग्रैंडसन विराज जी यहाँ पे आए और इनका प्रोग्राम इतना बढ़िया रहा, हम सबने बहुत ही एंजॉय किया और हमें याद दिलाई पंडित भीमसेन जी की। उनके आवाज़ के धुन नेचुरली वो लगती है और उसके बाद उनका खुद का उनकी लगन और संगीत की प्रति निष्ठा बहुत अपूर्व है और जो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिली, हमारे सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। एंड योर हार्मोनियम वाज ब्रिलियंट, अमेझिंग। थैंक यू फॉर दॅट। हां, कसा वाटला एक्सपिरियन्स? फारच मस्त, खूप मजा आली, खूप छान वाटलं आणि असे कार्यक्रम आपल्या इथे होतात आणि आपण सगळे एकत्र येऊन हे करतो, हे खूप छान वाटतं। थैंक यू। निखिल जी, आप बताइए कैसा लगा ये एक्सपीरियंस आपको विराज जोशी? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने इनके ग्रैंडफादर के साथ उनके घर में रियाज करते टाइम उनका और एक शिष्य है आनंद भाटे, उसके साथ मैं उनके घर पे जाके बजा के आया हूँ। तो इट्स अ ट्रेडिशन विच फॉलोज, विच इज अ रियली गुड थिंग, एंड आई होप ही कंटिन्यूज दैट ट्रेडिशन। थैंक यू। नीरज, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? इट वॉज रियली वंडरफुल, आई रियली एंजॉयड इट्स। बहुत मुश्किल है यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स होना, बट बिग थैंक टू अमोद जी एंड ऑफ कोर्स टू एवरीवन वाज इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्सर्ट कि ऐसे मंझे हुए फनकारों को हमें सुनने का मौका मिलता है एंड बहुत मजा आया। थैंक यू।
वेदा जी आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब किसी लेजेंडरी व्यक्ति के ग्रैंडसन को इतनी करीब से सुनना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उसको वही बोला कि 10 साल बाद आप मतलब आपका जब नाम होगा तब हम लोगों को लगेगा बाप रे इतनी करीब से हमको ये मौका मिला कि इनको सुने। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू। happy is that Amod and Jyoti have almost taken the baton. कारण का मला संजीव अभ्यंकरची आठवण आली, मला आरती अभ्यंकरची आठवण आली जेव्हा ते कॅमेऱ्याला आले होते आणि आम्ही करायचं प्रोग्राम आणि आता मला इतकं मन भरून आलं आणि अमोद आम्हाला एवढी माहिती नाही गाण्याची पण we love to listen. But that's the whole idea. That's the whole idea. You don't have to understand it. It's like life. Oh, Shyam, he's just crying. Then जो बजे हरी को सदा move people to tears. त्याच्या आधीच त्याचं रडत होतं नुसतं प्रत्येक गाण्यावर तो इतकं इन्व्हॉल्व झाला होता.